pressure at all. Okay, so we are honored and overwhelmed by the film which is being given by the Madam as well as Bhavija Studios, those who are making a foray into the distribution. And it is a very proud moment associating with the Bhavija Studios. Thank you for everyone to give us this opportunity. And yes, we have been distributing films, we have been making films for a longest period of time, like last 30 years. And now it's a successful franchise. We're very amazed to be collaborating with this. आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद मुंबई में इस स्टेज पर हूँ एंड आई शुड से थैंक यू टू माय हस्बैंड फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल फिल्म। इनफैक्ट ये जो फ्रेंचाइजी है ये तो बिल्कुल पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। आई एम जस्ट द पर्सन हु साइंस अ चेक एंड दैट्स बिकॉज आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन हिम एंड आई थिंक probably our 20th film in our production house, Avni Cinemax. And fortunately, we have a success rate of 90% when it comes to the filmmaking. And again, the entire credit should go to him क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना कि the dirty job behind the screen वो सारा काम वो करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, कैमरे के सामने होता है, तब मैं आती हूँ। Actually, I was a part of Aranmani 3, so this is my second horror film. Okay, so how was your experience? So मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और पहली बार मैंने अरनमनई 3 में देखा था कि हॉरर फिल्म कैसे बनती है। तो बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है हॉरर फिल्म में एक्ट करना, लेकिन डायरेक्शन बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक द कैप्टन शिप सुंदर सी सर इज अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट। एंड जितने भी आप स्केयर्स देखते हो या जितनी भी आप कॉमेडी देखते हो, बहुत सारे लोग कभी कभी कॉमेडी का ओवरबोर्ड कर देते हैं एक हॉरर फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इस फिल्म में स्पेसिफिकली बोथ आर अ स्ट्रेंथ, नॉट वन ओवरपावर्स द अदर। सो आई फील इट्स अ परफेक्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म। शायद इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और इसमें जो हॉरर एलिमेंट भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओगे या बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स यू कांट वॉच इट। यू कैन डेफिनेटली वॉच इट विद योर फैमिलीज। एंड बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आ रहे हैं। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। numbers are already speaking and मैंने फिल्म देखी है, तो I can also say that it is a collaborative effort. More than me and Tamanna, also there are these wonderful comedians we have जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में। तो I think it's always a collaborative effort and I hope that the Aranmani series keeps going on and on. That's what I was telling sir. I said आपने बहुत you want a lot of moolah and a lot of respect and I feel that it keeps going on and on. Tamanna is also fabulous in the film. I've seen it and she's superb. I think और हम बहुत मस्ती करते हैं, हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं। तो आपको पहले ही बता देती हूँ दैट यू गाइस हैव टू आस्क वेरी फन क्वेश्चंस बिकॉज मैंने बहुत बिल्डअप दिया है दोनों को, बहुत मेरे अपने डायरेक्टर को बहुत बिल्डअप दिया है, खुशबू मैम को बहुत बिल्डअप दिया है कि हमें यहाँ पर तो बड़ा मजा आता है। आई लव प्रेस मीट्स बिकॉज द मीडिया इज ऑलवेज सो वार्म, वेलकमिंग. I have the most fun interacting with the media here and I'm so proud. Thank you for supporting a film that आज हम celebrate कर रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो फीमेल लेड है with just a South Indian release, I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहा है कि अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताऊँ नहीं तो इट विल बी इनजस्टिस। सुंदर सी सर के साथ मैंने इसके पहले एक फिल्म में काम किया है। मेरे हिसाब से ये हमारे देश के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से है जिनको फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इमोशन टू कमर्शियल फिल्म की सेंस है। एंड ये उन्होंने बार बार साउथ में प्रूव किया है और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि उनके साथ काम करने का मुझे अपने करियर के अर्ली टाइम में शुरुआत में मुझे मौका मिला। ये फिल्म और उनके बारे में जो मुझे बहुत पसंद है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं या हम बोलते हैं वी नीड टू मेक मोर फीमेल लेड फिल्म्स, बट मैंने इनको देखा है कि ये घर पे द काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट ही हैड विथ हिज गर्ल्स, ही हैज 2 वंडरफुल गर्ल्स, ही हैज खुशबू मैम, दे आर द परफेक्ट फैमिली दैट एनीवन एस्पायर्स टू हैव। एंड ये उनके सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो वो रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे दर्शाती है और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज इन स्टोरीज में देख पाते हैं। एंड आई फील लाइक ही इज ट्रूली, ये प्रतीक है एक्चुअली हाउ टू एम्पावर वुमेन, उसका एक्चुअल प्रतीक है क्योंकि ये सिर्फ घर पे ऐसे नहीं है,
लेकिन ये बाहर भी उसे बहुत ही प्राउडली एग्जिबिट करते हैं और अपनी फिल्मों में दर्शाते हैं। ये क्लियरली अरनमने का फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट होने के नाते ये फिल्म ऑफ कोर्स पहले भी बहुत चली है, ये फ्रेंचाइज बहुत चली है, इसीलिए चौथा पार्ट बना पाए हैं ये। सो आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे जो कैरेक्टर दिया है मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था मैं प्ले कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में अभी भी बच्ची हूँ। I think I still no maternal instincts have kicked in, so I am treated like the baby in the house. And जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई और बताया कि you're playing a mother who's a protector and who is एक औरत का हर रूप दर्शाने का मौका दिया है इन्होंने इस फिल्म में, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि मेरे पास आई फेल्ट इट्स टू प्योर एन इमोशन, मैं इसे कहीं और से नहीं ले सकती, तो आई हैड टू टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम माई ओन मदर। एंड मैं घर पे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, अभी भी मिलता है, अभी भी मतलब इस उम्र में भी मुझे बच्चे जैसा ही ट्रीट किया जाता है। तो उस फीलिंग को लेके एक माँ कितना अपने बच्चे को कंफर्ट कर सकती है, कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो, और अगर वक्त आए जब उसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़े तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये इस फिल्म का एक्चुअली सोल है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सी सर, बिकॉज अगर आपने मुझे इस रोल के लिए कंसिडर नहीं किया होता तो शायद ये फिल्म कोई और एक्ट्रेस कर रही होती, और ये फिल्म जो भी एक्ट्रेस करती है वो उसके लिए इट वुड बी अ फेदर इन हर कैप। सो आई फील वेरी लकी कि अरण्यमनई 4 का ये किरदार जिसका नाम है सेल्वी, तमिल वर्जन में तो सेल्वी है, वो मुझे करने मिला। And Khushbu ma'am, she is the wind beneath Sundar C sir's wings. She's such a rock solid lady, and I feel so good that I'm working with all these very rock solid people. For me, Rashi is one person who I actually find a lot of love and warmth whenever I meet her, and we've worked together before in a Telugu film. लेकिन I don't know, somehow एक प्रोफेशनल जैसा रिश्ता ही नहीं है। मैं बहुत पसंद करती हूँ राशि को, क्योंकि वो बहुत ही एक सिक्योर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। इस तरह का ठहराव शायद हमारे देश में कुछ एक्ट्रेसेस दे पाती हैं। मैंने देखा है फिल्मों में, स्पेशली जब कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, there's a lot of हम एटलीस्ट साउथ इंडियन फिल्म में आई हैव नोटिस्ड बीइंग प्लेइंग bubbly characters, but I've seen Rashi always bring so much subtlety, so much softness, so much realism to her characters. I'm a big fan of Rashi, but I'm a bigger fan of how amazing a person she is and how beautifully she's outside. So yeah, I'm so happy, Rashi, we could do this together. It's a very special film for the both of us. And yeah, this entire journey for me has been extremely, extremely rewarding, because अगर ये फिल्म आज साउथ में इसने अगर 100 करोड़ किया है, इट्स अ ह्यूज वैलिडेशन फॉर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, कि अगली बार होपफुली फिल्म मेकर्स फीमेल लेड फिल्म्स पे ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी वैलिडेटिंग, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये फिल्म को प्यार मिल रहा है, और अब ये प्यार हम आपसे भी चाहते हैं, इसीलिए हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, ताकि जो पूरा देश है इस फिल्म को सेलिब्रेट कर सके, जैसे साउथ इंडिया ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है। और मैं लोखंडवाला की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आके अपनी तमिल फिल्म सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हिंदी में रिलीज होने वाली है। अरण्यमनई 4 is in theaters from the 31st of which month are we in? Yes, that's how much I remember which month we are in. 31st of May. Guys, please watch this film. It's super emotional. It is a horror comedy, and I think horror comedy that is filled with entertainment. And I'm more nervous now because this is the first time I'm being in front of Mumbai media, press, everybody. And excuse me if I make any mistake in my language. Very, very nice to see you in my Aramnai 4 function, because Aramnai 1 was a big hit in South, and it was dubbed in Hindi as Raj Magal, as you know. That movie did so well in OTT and satellite channels.
After that, all the South Indian movies which have RR or comedy, they are dubbed in Hindi as RR, Rajmahal 2, 3, 4. Now the line is going on. So I have to wait for a Rajmahal franchise number to get. At last, I'm getting my own title for the Hindi dubbed version. So happy. Actually, I was discussing with Tamanna. The main reason for the Aramnai 4 success, one of the main reasons for Aramnai 4 success was when I was doing that movie. The movie was really, when the movie was ready for the release. Normally in the South, they'll have the pressure only after the release because they are scared whether the movie will carry good report or not. So always they will have the press meet after the release of the movie. And I had only one marketing strategy for my movie, that's Aramnai 4. I had the press show before the release of the movie. And the only one condition I put forward for my press and media friends down south was they have to come with the family to the theater for the press show. Because I arranged a big theater with more than 1,200 capacity, and all the press and media friends come to the theater with the total family. So when they saw the family laughing and enjoying the movie, automatically I got a very good reviews for the movie. And even before the release of the movie, my movie was declared a super hit success. So that's the power of media and press. So I hope you will also support the movie tomorrow and help it in making it a big success. And to talk about Aramnai 4, all the 3 movies before I did in the Aramnai franchise are all super duper hits actually in the South. Even though the movies are super hit, I didn't do it the next franchise immediately. For the fourth franchise, I took nearly 12 years to make it the 4th movie. Because I don't want to capitalize on the success or to make the money. Okay, immediately we'll take the Aramnai, one more Aramnai, we'll earn money like that. I never went like for that. I always waited for a nice script, nice idea to come. So then only I will touch the Aramnai franchise because the expectation for Aramnai in the South was huge. So when I got an idea for this Aramnai, it will be a little, quite a longer story, please excuse me. Once I was going through some history books, I find it one funny thing. Lot of kings who ruled India, someone like Ashoka or Akbar or Aurangzeb, who ruled most part of the Indias, their borders in the north, in the south and west, it differs. Somebody went till Afghanistan, someone went till Pakistan, like that. Even the south, they came till Hyderabad, someone came till Madurai, like that. But in the eastern side, like a line, nobody crossed Brahmaputra, most of them. As per my knowledge, nobody crossed Brahmaputra. I was curious to find the reason, and historically there were a few reasons for that. There was a big dynasty, there were brave warriors, and a lot of guerrilla warfare was there. So these kings were unable to cross Brahmaputra. These are all historically. And geographically, they said another reason, after Brahmaputra, there is a lot of forest, hills, and a lot of rain. So the kings were unable to cross the border. And I felt there was, because they who were able to cross even the Himalaya borders, they won't find it difficult to cross the Brahmaputra. And also they won so many kings, warriors everywhere, all over India. I don't think it will be difficult for them to cross over the Brahmaputra and conquer them also. And when I was looking through it, there was another 4th reason for that, which was believed by some of the few segments of people there. That was the reason for the king not crossing the Brahmaputra river, it was out of fear of ghosts. Because at that time, the land was called as land of possessed by some of the people over Brahmaputra. So the kings were scared to cross Brahmaputra because of the ghost fear. That was believed by some few people or segment of the people. And till today, there was a lot of folklores going up on the telling about the stories of the ghosts there. There are a lot of characters. And one of the interesting folklore was about Bach. I was very curious to read when I read about that Bach. The Bach, they say, it's something paranormal thing, lives near the river side, which will eat somebody who comes to the river side and take their shape, and they'll go and bring more people near the river, and they'll kill them, take the shape, like that. The story goes on. But that particular character of Bach was very interesting for me. So I took that particular idea of Bach. What will happen? The Bach come alive and come to our south. What will happen? That's the basic line of the story. When I got this idea, I was so interested. Immediately I thought of doing that another franchise for Aramnai. And now I'm standing in front of you because of that one idea.
and it got connected to all over the south. So that's the way Aranmanai 4 started. That's a lot to talk to me. Sorry, a lot to talk for me, but waiting for your questions. And thanks, Tamana and Rashi, for the nice words. The talks is going on for quite some time because the problem for me is language is the biggest problem for me. And my wife now told me I have to do a Hindi movie. Otherwise, there'll be some problems at home. So I'm in talks now. I've been threatening him. Thank you very much. I'm very, very humbled and overwhelmed to be here. And Sundar sir, welcome to Hindi. And सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूतों में विश्वास है कि नहीं. हम सबसे पूछते हैं कि आप भूत में विश्वास करते हो, ऐसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अगर आप खुद ही भूतों में विश्वास नहीं करते तो ऑडियंस क्यों आएगी भूत देखने के लिए. लेकिन 3 घंटे जब अरनमनई 4 स्क्रीन पे चल रही थी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि भूत होते हैं और शायद बाघ होता होगा आसाम से, जिसको आप साउथ में ले आए और अब हम मुंबई में लेकर आ रहे हैं. अगर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड तेलुगु में, तमिल तेलुगु बोथ ओनली, ओके, सो ओनली तमिल में एंड वर्ल्ड वाइड एक आसामी भूत धूम मचा सकता है, तो आई एम श्योर कि हिंदी ऑल्सो विल एक्सेप्ट द फिल्म विद ओपन आर्म्स. Karmic Films is very, very proud, very, very humble to be associated with all you beautiful stars. Pavija Studios, this is our first venture together, and we have superstars on board. I'm very, very, very grateful and blessed. Thank you so much. The thing is, when I finish the script of the movie, I want a artist. That's the core of the movie, actually. She should be very powerful in her performance. At the same time, audience should relate to her, and she should have a star value also. So we have to put together everything. The glamour should be there. That everybody knows that Tamana is glamorous, everything. But performance oriented, I want to bring the other side of Tamana because I know already we have worked in a movie. I know how talented she was. The movie before that we worked on some movie called Action. The title itself was Action, and we did some miraculous, great action sequence in Turkey, Azerbaijan, everywhere, and she did a fabulous job. Now I want to bring out that emotional and performance side of Tamanna. I think once you watch the movie, you'll understand, you can see it by yourself, how talented she is, because the other side of Tamanna, which before that I think nobody have seen in a lot of movies, it came out in Aranmanai 4. And such a fantastic actor, such a dedicated, because a heroine to nearly survive for nearly 18 years, it's not an easy job. Only the dedication, professionalism, everything will make her what she is now, made her what she is now. And Aranmanai 4, I am very happy because in the South, nobody expected Tamara to perform so well, to be frank. And it was a sweet surprise for everybody. And whoever comes out of theater after watching the movie, the first thing is they talk about is Tamana's performance. So thanks, Tamana, for getting great. And I tortured her so much. It was, even though she's doing some emotional scenes, it was totally in the rope, lot of action sequences. She's carrying 2 kids in the rope, have to fly, dive, lot of things. Even after the death in the movie, she was having the rope scenes, everything. So difficult to perform with that difficult sequence. Tamana came out with flying colors, and thanks her for making my praise to Tamana to come out. Yeah. पैदाइश परवरिश पूरी मुंबई से हुई है, सो मुंबई ची मुलगी मी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट काम था तो चेन्नई गई, वहाँ पे बस मिल गए, वहीं पर अटक गई. तो एंड बस कहते हैं ना कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो एक भगवान की कृपा होती है, उनकी देन होती है. तो मैं ट्रूली समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटर हाफ सुंदर सर जो हैं वो एक भगवान की देन है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती. क्योंकि कहते हैं कि कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आई ट्रूली बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन हु हैज़ अ बिगर हार्ट, एंड दैट इज़ डेफिनेटली माई हस्बैंड. तो बहुत अच्छा लगता है कि आज तक मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे कहा होगा कोई चीज़ ना करें. कहते हैं उनकी ओपिनियन होते हैं, लेकिन कहते हैं कि डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए. एंड जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हर वक्त जब मैं बॉम्बे आती हूँ कोई ना कोई पूछता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं काम करती हैं, आप इतने साल हिंदी में से क्यों दूर रही हैं. वहाँ पर काम था, फिर शादी, फिर इमीडिएट 2 बच्चे, और मैं बहुत ही हैंड्स ऑन मदर रही हूँ. तो 2 बेटियों को बड़ा करते करते काफ़ी वक्त लगा.
बड़ी बेटी ये सितंबर में 24 साल की हो जाएगी और छोटी वाली 21 साल की है। तो बस फैमिली लाइफ में रही, अभी वक्त है, तो अभी शुरुआत होने वाली है, तो देखते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, तो उसमें बहुत ही एक फख्र महसूस होता है, अच्छा लगता है कि यहाँ से दूर रही लेकिन फिर भी एक कुछ अचीव करके, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके एक मुकाम पर पहुँचकर आप सबके सामने आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर. It's high time people stop looking at women. I mean, I definitely do not appreciate when they say, every time a woman achieves, oh, she is shattering the glass ceiling. I said, why these terms are used only for women? It's because they do not expect women to do well. There's a basic mindset where they feel that women cannot do, there's something which holds them back. But I say you give them a platform to achieve, give them those wings to fly high, and women can do wonders. So what we have seen at Cannes and what we see with Aranmanai 4, with of course Tamanna and Rashi, and we have a very brilliant actor called Kove Sarla. She's a character actor who has done a very major role in the film. I think these three women have really taken it forward, and I think all I say is stop looking at women with a very pre-assumed mindset that women cannot achieve. Just let them loose. Give them that free hand. Like you never ask a man, he has achieved something. He's broken the glass ceiling. Nahin. So why those kind of phrases is only for women? Appreciate women. The equality has to start in your minds the minute you understand that women are absolutely equal to men, not physically, but when it come to terms with their professionalism or their talents, I think women are definitely a step ahead of men when it comes to talents. So just let them fly. Just let them go free and stop judging them. You know, even before you know them, most of the people around, they come with this judgment, a very opinionated and a lot of judgments about a woman. So I think we need to stop being opinionated about them. We need to stop having our judgments about them and just let them be as they are. And you will see women will be flying high. I think it's a validation for all of us as female actors that we can hold a film on our shoulders and still deliver. For that, we also need filmmakers who believe in us, filmmakers like Sundar C sir and everybody who puts an effort to put such a film on a female's shoulder. And I think art and cinema should be beyond gender. It's high time we treat it like that. And I think films like Article 370 or Crew or even now our film have only proven that women are as far ahead as men are, and I think even this conversation shouldn't exist in time where everybody should be treated equally and everybody and art should be judged by the way it's made and not by who's in it, I feel. And that should go beyond gender. That's what I feel. And I also feel that should also we should get better paychecks in films, honestly, because there is a huge gap, and I hope that happens in time. It's a process, but I'm very, very proud of what has happened in Cannes as well. Seeing those women, it's an amazing feeling because, anybody who lights the way paves that path for all of us. And I'm very, very proud of the film, and I'm proud of what women are achieving. Indian women also, like far wide, worldwide. So I think it's a very proud moment for us to bring this film to you and tell you that, okay, this is what we've earned and this is what we are bringing to the Hindi audiences. And I hope that you guys watch it and the numbers go even higher up because that really validates our existence in the industry is what I feel. डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से हैं. अगर आप दिल्ली से हैं तो फिर भक ही आएगा. लेकिन अगर आप साउथ से हैं तो आपको बाकू बोलना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली ये आसामीज शब्द है. So yeah, really depends from where you are. No, just as the character, it doesn't influence anywhere in the script. Just as a character, I have to do some job. So it's a lawyer. So nothing particular reason to play a lawyer or a doctor in this movie. I think बचपन में तो कोई horror film में देखना चाहता नहीं है when you're growing up. But I think I started loving horror films when I was growing up as a teenager. तो मुझे उर्मिला जी की एक फिल्म थी भूत ना उनका. Yeah, that was one of my favorite Hindi horror films. And usually हम horror films देखते हैं तो English फिल्में ही दिमाग में आती हैं जैसे Conjuring है, तो वो series आती हैं. But I'm very happy that मुझे नहीं पता था कि in time in life I will be a part of a series in the horror genre. So I'm very happy and proud to be a part of it. But हाँ, बचपन से हिंदी में तो मुझे भूत याद है और नैना
उनका नाम था शायद फिल्म में मैम का. So I remember that very clearly because I remember that film shook me because she was fantastic in the film. और I think horror as a genre should be explored more, ऐसा मुझे लगता है, because बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो especially हमारे Indian फ्रेम में, बिकॉज आई फील बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग, जैसे हमने तमिल फिल्म बनाई एक असामीज भूत के बारे में जान के, तो आई एम श्योर दैट देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज एंड आई होप ऐसी स्टोरीज बनती रहें और यू नो हमारे हम जैसी ऑडियंस एंटरटेन होती रहे जी. एक्चुअली मेरी फेवरेट फिल्म सेम एज राशि हिंदी में भूत रही है. उर्मिला जी का काम बहुत बहुत उस वक्त सब हिल गए थे क्योंकि इस किस्म का परफॉर्मेंस तो हमने देखा नहीं था और उनसे ऐसा रोल एक्सपेक्ट नहीं किया था. लेकिन जो इंग्लिश फिल्म है जो शायद मैंने इसी थिएटर में देखी थी, आई डोंट नो इफ इट वाज दिस थिएटर बट इट वाज अराउंड दिस एरिया, वाज हाउस ऑफ वैक्स. एंड उसमें ना वो मार देता है लोगों को, उनको अलग अलग तरीकों से वैक्स इस्तेमाल करके उनको मार देता है. तो उसके बाद मैं वैक्सिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि एवरी टाइम आई वुड वांट टू गो फॉर वैक्सिंग आई वुड जस्ट थिंक ऑफ दिस मैन ट्राइंग टू किल पीपल विथ by putting wax on them and you know chipkawing them and then I don't know doing strange things. So that was a bit traumatizing. But I am actually I believe मतलब मुझे छेड़खानी करना पसंद नहीं है तो मैं तो बहुत डरती हूँ. तो आई एम एक्चुअली द ऑडियंस जो ऐसे हॉरर फिल्म्स देखती है. कुछ हुआ क्या. So like that's me watching a horror film. I kind of don't see it, I hear it most of the times. But I am part of BJP, so like everyone else, I'm waiting for the results on June 4th, which we are very sure that ab ki baar 400 par, phir ek baar Modi Sarkar. So no two ways about it. We're absolutely excited about that. Apart from my party leader, apart from the highest regards what I have for a prime minister, if you ask me who has been my favorite politician, I would always say it was Dr. Kalaignar, because I started with my political life with Dr. Kalaigner's party when he was the chief minister, and I think I always say, and I always consider him to be my teacher when it comes to the political nuances. I've learned a lot from him, so I have greatest regards, and I always hold him in high esteem. So it has to be, apart from my leader, it has to be Dr. Kalaignar. The scenario is changing now after the OTT, everything is The scenario has changed, and especially in Tamil, and also my style of working for the last 15 years is I never go behind a hero for a date or something, anything. For me, first script is the most important thing. First, I'll do the script. Then I'll cast the artist as per what the script demands. Irrelevant of what the market value is, business value, nothing. For me, the artist is with the character, and they have the talent to do the character. That's the two thing I just watch. So I always go according to the script. And now for the last 7-8 years, after the OTT innovation thing, market boom, everything, lot of female-centric movies can be made. That faith and hope has come to the filmmakers like me, because market value is high. There's no more audience. Maybe there are a couple of the maybe heroes we can have count in 4-5 heroes will be in the market level. Irrespective of what the star cast, what the budget, who's the technicians are, they'll bring in the crowds. Apart from that, only the content, what the movie is holding, what the movie is giving for the audience, that will bring the audience to the theaters. So there's no the hero or heroine centric, nothing. Now it's common. If you have a nice script with the heroine, the content is good, the movie will be a hit. So that Aramnai 4 has proved that. A lot of female centric movies is coming nowadays. So I don't think now year after we have to talk about only hero-centric movies will have the market or business value, nothing. Now audience are looking for good content, whether it's hero-oriented or heroine-oriented. They are not looking forward. I actually think of it like, at the end, it is every actor's journey as to what they want to do in cinema. And it is literally an actor's choice. I feel it's unfair to always put everything onto an industry or a gender, because these things are generalizations, but I don't think it works like this. Our industry, although it's a small, close-knit one, every actor has his or her freedom to choose what they want to do, what kind of work they want to do. If somebody with their goodwill wants to do something like this, it's really up to them. So I actually don't hold anything against anybody, because everyone has a different work journey. Yes, I have done many films in which I thought I wanted to be a part of the film, so I did it. But that was me as an actor making that individual choice. Yes, it's lovely if we could get, support. But like Sir said, in today's time and age, I don't think it matters
I'm saying it even for my character, had another girl done this film, I think she would have benefited from this film. This merit would have gone to her. So I feel like what matters today is the content actually being that good that it pulls people into theaters regardless of who's in it. And I think that's the only way to go forward. I think that's why also we are making waves as a country internationally also. That's because the work is good. So yeah, that's what I feel about it. I think they've already answered the question for you, but I'd just like to say that content is king today, and the success of films like Aranmane is proving that and paving that way forward for all of these individual films, where women are the lead. And I think it's high time we start making those films because they are also commercially viable today. So I think we're in a very good time, and a lot of actors, their thinking also I see changing. Because now it's not more about अरे मेरा कितना रोल है इस पिक्चर में, मैं हूँ कि नहीं हूँ. It's more about, okay, even if it's a small part, how well can I do it? How will this film have a reach because of the content that it has? Do I have a good character? And so their thought processes have changed, and nobody today knows what will work and what will not work. So I think it's the best time to experiment and see what works for you as an actor. And I also I also hope that even male actors start thinking like that. A lot of them that I know have started thinking like that already, because nobody knows, there's no formula anymore. So I feel it's a great time to be actors in the industry, and things are changing. It will still take time, but I hope they change soon. Yeah. पहले तो मैं बड़ी excited होंगी कि भूत हैं तो मुझे देखने हैं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं. I think I'll be more excited in trying to figure out if Ghost 6 is, rather than putting my attention there. I know तमन्ना की आंखें बंद होंगी और वो कहेगी तू देख ले because उसको बहुत डर लगता है. But I think I will take it head on because this is one topic that has always interested me, because if there's God, there's also devil. So I do believe that ghosts exist, और ऐसा अगर situation होती है तो I think it's very exciting for me. But I know how scared तमन्ना would be. बहुत ही अच्छा आइडिया एक्चुअली. हम रखते थे भूतों के लिए स्क्रीनिंग. वैसे भी भूत सर कटे होते हैं तो उनका सर नहीं होता, तो वो भी आके ये फिल्म अपना दिमाग कहीं छोड़ के ये फिल्म देख सकते हैं. would be great, would be like so many films, right? Maybe they'll give us better ideas to make horror films. Possibly maybe we will take an advice. बहुत खुश होंगे हम, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि भूतों ने, जो किसी भी फिल्म स्क्रीनिंग को ग्रेस नहीं करते, हमारी फिल्म के लिए आए हैं. We would feel important. इतना दहशत फैलाते हैं. I don't think भूत इतना दहशत फैला सकते हैं जितना इंसान फैलाते हैं. तो I feel हमें भूतों से कम और इंसानों से ज्यादा डरना चाहिए. नहीं, वो एक्सपीरियंस आप पूछ रहे हैं ना on a very light note. मुझे भूतों से डर लगता है क्योंकि मैं उनको समझती नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं डरती ज्यादा इंसानों से हूँ. बट आप जो पूछ रहे थे कि भूतों से पला है, हाँ, कभी ऐसे होता है ना, एक्सपीरियंस होता है कि कोई जगह हॉन्टेड है on या a lighter शूटिंग note. और अच्छा हुआ आपने सवाल उनसे पूछा नहीं. नहीं, मेरे हस्बैंड से नहीं पूछा, तो वो कहते कि पिछले 30 साल से एक से पाला पड़ा हुआ है. They wanted to know if you have ever experienced anything in this. काफी होता है. In fact, अगर आप पूछें तो, अगर आप गूगल भी करें तो the most haunted place जो सुनी जाती है apart from Scotland, I think ऊटी माना जाता है one of the most haunted places of India. तो हम हर शूटिंग हमारी ऊटी में होती थी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता था हमें. तो मतलब ऐसा है कि कहीं दरवाजे के बाहर कोई आवाज आ रही है या घर के अंदर सडनली लाइट फ्लिकर हो रही है, तो हम लोग लाइक यार सोने देना, तू भी सो जा. So that is how we used to do. हमें आदत हो जाती है. If you Google there, you'll find the most haunted place in India. There is one studio, famous studio. I think it shows second position in that most haunted place. And most of the industry people have experienced that thing. Some experience are there. Most of the South stars, you can ask for their experience. Most of them will have. Some will accept, some won't accept. But most of the top stars won't stay in the particular hotel which is there in the studio. देखिए, मेरे बहुत सारे सीन्स कॉमेडियंस के साथ हैं इस फिल्म में, तो उनके एक्सप्रेशन देख के ही आधा टाइम मुझे हंसी आ जाती थी, और मैं मतलब अपनी डायलॉग बोलने से पहले अंदर से एक हंसी को रोकती थी, बिकॉज दे आर सो गुड, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दोस कॉमिक सीन्स. तो मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ काम करना. ऐसा पर्टिकुलर फनी सीन नहीं है, बट आई थिंक द फिल्म ऑन द होल, द वे दे हैव रिटन द कॉमेडी इज लेस्ड वेरी वेल. तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. बट आई थिंक बहुत सारे एक्चुअली रोप शॉट्स थे, तमन्ना के लिए बहुत ज़्यादा थे, मेरे लिए कुछ थे, तो वो भी मैंने एक्चुअली एंजॉय किया टू सी ये उड़ते कैसे हैं, बिकॉज पहले कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो भी दैट वाज आल्सो फन फॉर मी ऑनेस्टली. आई रियली थिंक इस फिल्म के लिए फिजिकल प्रेप से ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल प्रेप ज़रूरी था, बिकॉज इसके पहले मैंने कभी एक माँ का किरदार नहीं निभाया है. इट वाज वेरी वेरी न्यू फॉर मी. लेकिन बहुत ही प्योर इमोशन है इस फिल्म में. सो फॉर मी कहीं से कूद रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, आई थिंक नन ऑफ दैट रियली मैटर्ड टू मी, बिकॉज
जो वजह थी वो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी थी. सो बट आई रियली एंजॉयड बिकॉज ये इस किस्म का डायनामिक शायद एक फिल्म में प्ले करने का मौका नहीं मिलता. Where there is so much physicality in the acting, but it's also very very emotional. तो ये जो blend था बहुत ही interesting था मेरे लिए as an actor to explore. But I feel as an actor, you want to be able to do all kinds of films, and obviously some will be places where you're not, where it's not very well written. So you do whatever that you get, you make the best out of it, and you try to create a character. Some where you know the whole onus of the film lies on your shoulder, which is great. That's also a film that we would like to do. We also like to do our singing and dancing because I really enjoy that in films. I enjoy commercial films. I enjoy content films. So aisa, I mean, obviously when we are doing a film, we want to see if the script, sometimes the script is great, sometimes the director is great, sometimes the co-star is great. So I think the decision matters on the whole कि हमें क्या मिल रहा है उस फिल्म से, you know, और हम हर तरह के किरदार करना चाहते हैं. So I think a film even like Aranmane, because I was a part of Aranmane 3 and I know the way it was made, and I didn't even listen to the script. Honestly, I don't think a lot of people know this, but मैंने script सुनी नहीं थी, story सुनी नहीं थी. मुझे सिर्फ सुंदर सर ने call किया और बोला मैं Aranmane 4 बना रहा हूँ, I want you in the film. And I said, sir, I'd love to be a part of it. और मैंने script सुनी थी, बैठ के उनके साथ जब मैं शॉट दे रही थी, सर मुझे बताना जरा हो क्या रहा है. And then he said, okay, this is your character, this is what is happening. And it came from this internal belief that I had in him about the film that he will make. As I said, he is the master of that genre, and he has proven that with the series. तो कभी कभी आपको वो ट्रस्ट फैक्टर होता है एक फिल्म मेकर में, और ऐसे ही आपकी जर्नी आगे चलती है. अगर आप एक ही तरह की फिल्में करते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और ऑडियंस भी आपसे बोर हो जाएगी. तो आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो आवर किटी इज फुल ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. या क्लाइमैक्स सॉन्ग में हूँ मैं, वो Okay, कैमियो but है मेरा. अच्छा, ओके. सिर्फ क्लाइमैक्स सॉन्ग में अच्छा. माई सेल्फ एंड सिमरन वी हैव डन अ सॉन्ग. बट वो तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, तो आ जाओ कर लो. बट अपार्ट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरा नाम वहाँ रहे. एज अ प्रोड्यूसर खुशबू सुंदर प्रेजेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एज एन एक्टर, क्योंकि हर वक्त एक फेज़ होता है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं. तो लगभग 200 फिल्में कर ली, सब नाच गाना सब हो गया, कैमरे के सामने सब हो गया. कैमरे के पीछे आप किस तरह से अपने आप को संभाल रहे हो बहुत ज़रूरी हो जाता है. So I think yes, I'm proud to be part of Aranmane as a producer, and of course to be proud always as an actor to be in front of the camera. Thank you.